So today we will be studying about root system. Root system is one of the part of plant morphology. So first of all we need to know about the term morphology. So what is morphology? Morphology is made of two words. One is morph, another one is logy. So morph means shape, आकार and logy means size. तो बेसिकली इसमें प्लांट के आकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को कि प्लांट के जो पार्ट हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, है ना, स्टेम्स होते हैं ना, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सारे प्लांट्स के पार्ट होते हैं। तो ये सारे मॉर्फोलॉजी के ही पार्ट होते हैं, मतलब वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर and fruit. So in the morphology section we will be studying about root, stem, flower, leaves and fruit. So first of all we are going to start from root and root system. So let us start. तो बेसिकली व्हाट इज रूट? तो देखिए रूट जो होता है नाम ही होता है जड़। तो प्लांट का ऐसा पार्ट जो नीचे की तरफ जाए, ठीक है, which goes downwards is called root. Okay, so it is underground part of the plant. Okay, अब इसके काम क्या होते हैं? बेसिकली दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट्स। ये क्या करता है? बेसिकली सपोर्ट प्रदान करता है। और इसके अलावा दूसरा इसका काम क्या है? कि वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। और किस लिए? ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करके बाकी के प्लांट को पहुंचाते हैं, लीव्स तक भी पहुंचाते हैं, जहां से फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड का निर्माण होता है। तो ये बहुत बेसिक फंक्शन है आपके रूट्स का। पहला, टू प्रोवाइड सपोर्ट, another one is to absorb essential mineral elements, nutrients and water from the soil. So now as you can see in a root, one is basic root and there are root hairs also attached with that here also, and there is a root cap. रूट कैप का क्या काम है? ये आघात से बचाता है, क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो इसको कोमल पार्ट इसके छिल न जाए, इसकी रक्षा के लिए कवच के रूप में रूट कैप होता है। इसके ठीक ऊपर मेरिस्टेम होते हैं जो वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, स्मेटिक टिश्यू होते हैं। अब देखिए इसका निर्माण होता कैसे है। आप यहाँ पर सीड्स को देख पा रहे हैं, ये सीड है। सीड को अगर सो करते हैं, व्हेन यू सो सीड beneath the soil, then what happens? There are two elongation. One is called radicle, which forms root and root system, and the another one is plumule, which makes shoot system or further elongation like stems, stalks, leaves, etc. Okay, so this is the basic thing related to roots. Now as you can see here, that like as already I told you that once you sow the seed in the soil, what happens? The radicle goes towards the earth, that is towards, it is positively geotropic, means it goes towards earth, and plumule goes upward, making a shoot system. Okay, so you can see in the video how
a root and a shoot system is originating from the seed. Okay, so here you can see that plumule goes upward and radical goes downward. Okay, now what is the function of root? As we have already discussed that the basic function of a root is to support the whole plant, and it also conduct food and not food, water and minerals to the rest of the plants. Now, apart from supporting plants and conduction of water and minerals, sometimes it also store foods. जैसा कि टैप रूट सिस्टम के कुछ उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि टैप रूट सिस्टम में स्टोरेज ऑफ फूड होता है जो कि खाने के पर्पज से भी यूज होता है. नाउ व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट? बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि पोटैटो is a root or a stem. So potato is a stem. Why? Because there are nodes and internodes in there, in the potato. So what is nodes for? Nodes can create elongation of a stalk and leaves. Okay, from the point of nodes or okay. So root is the descending part of plant और ये रेडिकल से निकलता है और अनलाइक स्टेम इसमें नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होता है. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्टेम का प्रकार है पोटैटो जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स. नोड्स और इंटरनोड्स का क्या काम है? यहाँ से स्टॉक का ओरिजिनेशन हो सकता है, डंठल निकल सकते हैं, पत्तियां निकल सकती हैं, तो इसलिए ये स्टेम के श्रेणी में आता है. तो इसे नोड्स और इंटरनोड्स ये लैक करता है. कौन? रूट. अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैंने बताया कि ये नीचे की तरफ जाता है ना, इसलिए ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है. जैसा कि आप देख सकते हैं अगर जियोट्रॉपिक है तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक भी होगा और ये निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होगा क्योंकि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कौन है? शूट है ना. स्टेम फोटो की तरफ जा रहा है यानी लाइट की तरफ जा रहा है, लेकिन रूट क्या हो रहा है कि लाइट के विपरीत दिशा में जा रहा है. दैट इज वाई इट इज निगेटिवली फोटोट्रॉपिक बट पॉजिटिवली geotropy. Now coming to type of roots. Okay, so taproot system, there are different kind of root system. One is taproot system, another one is fibrous root system and the third one is adventitious root system. देखिए तीनों के वर्क अलग अलग है, डिफरेंट पर्पसेस से इनका निर्माण होता है. Taproot system basically they are meant for the storage of foods and it is basically characteristic of dicotyledonous plants. However, fibrous roots are characteristic of monocotyledonous plants. Okay. So now taproot system we will be studying in this chapter only about taproot system. In the next chapter we will be studying about adventitious root system. So now coming to the taproot system, sometimes it is modified for the storage of foods. Okay, apart from that it goes straight towards the here earth. You can see there are primary and secondary roots also and it forms the whole taproot system. Example you can see in the form of mango, gram, pea, etc. Now we will be studying about modification of taproots. So sometimes taproot system is modified to store foods. Okay, and we have different examples for them like fusiform. So the structure of fusiform, like you can see that in the middle it is swollen. In the middle it is swollen, but it gets tapered towards the end. And example is radish. So you can in radish you can see the same structure, that is in the middle it is kind of fatty, but when it gets to the end it is tapered. So this is the form of fusiform. Now coming to napiform, as you can see in the case of turnip and beetroot, you can see that just around the base it is swollen and it makes a round structure, you can see in here, but suddenly it gets tapered. You can see in here, suddenly it gets tapered. So the example therefore
is turnip and beet. Now coming to another modification of taproot, that is called conical. So what happens in conical, in the base, around the base, you can see that it is swollen or it is more fattier, but it gradually tapers. Not suddenly, gradually it gets tapered at the end. You can see in here. And example is carrots. So these were the modification of taproot system in so many exams, including your APO, judiciary, BPSC, executive, etc., UPSC also, in GK, GS portion. Basically, they ask from modification of taproot. Okay, modification of taproots. However, sometimes it is also seen that some question from adventitious root system has also been asked, that we will see later in the next session. Okay, so now one is fibrous root system. You can see in here that it is the characteristic of basically monocotyledonous plant, and it forms a fibrous root system. How it is made, that it is not, you can see that at the base of the plant, this hair like a structure, elongation, okay, goes downward the earth. Okay, so this makes a fibrous root system. They are hair like structures, and it is basically found in monocotyledonous plants. And you can see the examples of wheat, rice. You can uh, see the plants of wheat and rice and grasses, etc. You can see these kind of fibrous structures. Okay, you can see in here in a wheat plant. Okay, uh, this is rice and this is wheat plant. Okay, so different kind of fibrous structure you can see here. Okay,